So I'll start off the class. When I say ethics, okay, let's be very clear. This is a part of your GS paper 4, which is 250 marks. And we have to score above average. Okay, if the average is, let's say, 120, you should get 125. If the average is 110, you should get 120. Even if you have extra 10 marks, okay, that will be in your favor. One. Second, when I say ethics as a paper, to learn ethics or to understand ethics is one part. To write answers is other. अभी तक आइडिया हो गया होगा कि एक चीज होती है समझना, दूसरी चीज होती है आंसर लिखना. तो एथिक्स में ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. For because in your ethics it's a full paper in itself. There's no paper, there's no subject that has one full paper, which except for ethics. So for writing answers, you should be very clear in using the vocabulary of the subject. The vocabulary of the subject, the keywords of the subject. And how do you get the keywords of the subject? Is through the syllabus. The first task that you have today is to learn your syllabus. आज का पहला homework रहेगा कि syllabus याद करना है. How many units are there in your syllabus? 8 units. First unit is human interface. उसके अंदर क्या है? Essence of ethics, determinants of ethics and consequences of ethics. उसके बाद first unit को ही पूरा बताओ ना. Role of family, role of leaders, administrators. ठीक है? तो understand, whenever I say where is the value coming from, you have an outlook towards a particular thing. The values always come from your first school. The first school is your family. The first agency of socialization is family. तो पहली चीज कहाँ से आती है? Family से ही आती है. तो point ये है कि syllabus याद करना, that is the first thing. Why do I say that? कि let's start off with an example. For example, when we say a corporate social responsibility is company की responsibility है. The companies have social responsibility. They have social obligation. Social obligation was to take care of the environment, to give back to the society. The same thing can also be asked in your GS paper 4. For example, CSR is very important for the society. Now, when it comes to polity, so the vocabulary is very different when it comes to ethics. Polity में क्या use करते हो? Fundamental rights, fundamental duties, board of directors. You talk about the procedural requirement of CSR. But when it comes to ethics paper, the term is very different. CSR को जब ethics paper के लिए देखोगे, तब क्या terms use करोगे? Fiduciary responsibility है company की. The company should give back to the society. गांधी जी का 7th sin है. Commerce without morality is a sin. तो commerce कर रहे हो, but morality नहीं है. ये भावना नहीं है that society को give back करना है. That is wrong. That is a sin. So what happened? The vocabulary changed. दोनों में same ही था. CSR था. That was the same thing that was going on. Here you talked about fundamental rights, fundamental duties, procedural requirement, boards of directors. यहाँ पे किसकी बात की? Morality की बात की. Giving back to society की बात की. Altruism की बात की. You talked about commerce without morality is a sin. So the terms, the vocabulary becomes different. क्या करना है? First few key essential, you have to know the vocabulary. For you to know the vocabulary, what is your base? The base is your syllabus. Syllabus याद करेंगे तो syllabus को use कर पाएंगे. क्यों याद करना है syllabus? ताकि मैं ethics की vocabulary को समझ सकूं. Ethics की vocabulary क्यों समझनी है? क्योंकि ethics का paper है. हर paper की अपनी एक vocabulary है. When you use the word storm surge, the storm surge you will generally use in your geography or you will use in your environment. When you talk about तो हर carrying capacity, ecology में use करोगे, economy में use करोगे, sustainable development में use करोगे. हर subject की, हर paper की अपनी vocabulary है. And to learn the vocabulary for ethics, it is your syllabus. Second, now when you write answers for ethics paper, आपका answer should be a sweet mix of theory, that is the concepts, जो आपको concepts पढ़ाएंगे, plus examples. You have to use the theory that will be taught in your class, and you will have to substantiate it by examples from the administration. अब examples कहाँ से ले? You have examples. You can take lot of examples from administration. You can take examples from polity. You can take examples from history. The other day in the workshop also we saw कि कैसे आप history से example use कर सकते हो, कैसे polity से example use कर सकते हो, administration से आप example use कर सकते हो. इसके लिए अपना एक repository create करो. Start creating a
रिपोजिटरी ऑफ योर ओन, ठीक है। नाउ जब रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग इट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स, ट्राई टू राइट इट इन 20-30 वर्ड्स, 20-30 वर्ड्स में यू कैन राइट। सो ये दो चीजें करनी है, एक तो सिलेबस याद करना है, दूसरा यू विल हैव टू नो दैट while you are writing answers you should write theory, you should also write the examples. We will look at the previous year questions. This is something that you also have to start doing. जैसे यूनिट हो जाता है, as the unit is over, you will have to start doing the previous year question. I will attach one Excel sheet. I have an Excel sheet of the ethics paper, wherein unit by unit आपको दिया हुआ है that in this unit this is the question that is asked, in this unit this is the question that has been asked. Have anybody of you gone through the previous year question? किसी ने देखे हैं previous year question? कैसे question पूछता है? अगर थोड़ा preliminary basis पे भी पूछे तो कैसे पूछता है, क्या पैटर्न है? अगर हम ethics का previous year question देखें, पैटर्न देखें तो this is a 250 mark paper, 120 marks या 130 marks की theory आती है. Theory के सारे question 10 marks के होते हैं. So the question either is 12 or 13 of 10 marks. Case studies is generally again 120 या 130 marks depending on कि first वाले का क्या weightage है. Case study 6 case studies होती है, ठीक है. There are 4 case studies generally of 20 marks. या तो फिर there are 4 case study of 20 marks and 2 case study of 25 marks. ये पेपर पैटर्न होता है कि 4 केस स्टडी 20 नंबर की है, 2 केस स्टडी 25 नंबर की है. दिस विल बिकम 130. या तो सारी केस स्टडी 120 नंबर की, 20 नंबर की, दिस बिकम्स 120. डिपेंडिंग ऑन ये कितने मार्क का है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट वुड बी दी परसेंटेज दैट यू हैव. फर्स्ट सेक्शन कितने वेट का होगा, 120 या 130. 12 से 13 क्वेश्चन 10 मार्क का. वो सिमिलरली उसमें भी ऐसा होता है 12 से 120 से 130 नंबर का होता है. If I look, this is paper pattern in general कि मार्क्स कैसे, नंबर कितने. अगर if I start off, questions पूछता कैसे है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा what is patriotism according to you, what is happiness according to you, what is anger, anger is a destructive emotions. तो क्या कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, आपका ओपिनियन जानना चाहता है, हैप्पीनेस क्या है, आपके हिसाब से पेट्रियोटिज्म क्या है. If I start giving blatant answers here, आप सब वही लिख के आओगे which will be a very स्टैंडर्ड. नंबर लाने के लिए कीवर्ड्स चाहिए, ठीक है. नंबर लाने के लिए आपको सिलेबस याद करना चाहिए, नंबर लाने की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए. बट ये एक पेपर है जो आपको रिफ्लेक्ट करने पे मजबूर करता है कि एक्चुअली व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू मी, व्हाट इज पेट्रियोटिज्म, हाउ इफ आई एम नॉट इन आर्म्ड फोर्सेस हाउ विल आई बी हाउ विल आई फॉलो माय पेट्रियोटिज्म. अगर मैं आर्म्ड फोर्सेस में नहीं हूँ, हाउ विल आई फॉलो माय पेट्रियोटिज्म. सो this paper gives you an opportunity to reflect, to think what kind of person you are and what kind of person you want to become. Ethics की कोई standard book भी नहीं है, इसीलिए challenging हो जाता है. But then you have a very good tool in front of you, that is your syllabus, that is your internet, that is your previous year question. तो 3 चीजें, syllabus, internet और previous year question. internet को use उस angle से करें कि definition चाहिए, importance चाहिए, patriotism की value का importance क्या है, ठीक है. किस एंगल से सोचना है, सोचना इस एंगल से है कि ये शब्द मीन क्या करता है, व्हाट डज दिस टर्म मीन, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ इट, ये इंपॉर्टेंट ही क्यों है, एंड हाउ डू आई इनकलकेट दैट वैल्यू. एथिक्स की बात करें, एथिक्स का सिर्फ बेस एस्टैब्लिश कर रही हूं मैं आज के लिए. 3-4 चीजें, आपका अप्रोच क्या है, सिलेबस इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एंड योर when you use internet, when you are using syllabus. अब syllabus का करूं क्या, एक तो सिलेबस को याद करूं क्योंकि ये वोकैबुलरी है, दूसरा करूं क्या, सिलेबस से मुझे डेफिनेशन चाहिए. सिलेबस में जो भी चीजें हैं लाइक द रोल ऑफ फैमिली, तो आई विल हैव टू सर्च नॉट ओनली द डेफिनेशन बट आल्सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, व्हाई इज फैमिली इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म, द रेलेवेंस ऑफ द टर्म एंड द एग्जांपल्स associated. What are the good examples? Role of family in bringing leadership skills. Can you think of an example? अब एग्जाम में वहां पे एग्जाम्पल्स नहीं बनेंगे अगर एग्जाम्पल्स पहले से प्रिपेयर्ड है, ठीक है. Somebody can give me an example of our present prime minister. Somebody can give me an example of Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, right? He was homeschooled. He was considered that this person cannot be school में इनको नहीं पढ़ा सकते. He's a child with special abilities. He's a child with special needs. So he was homeschooled. When a teacher lost the faith, when the school lost the faith, there was one lady that had faith. That was his mother. और अभी जो ऐसे भी आ रहे हैं, समझो, ethics is not simply about this paper.
ऑल्सो जो ऐसे का पेपर आ रहा है दैट इज ऑल्सो फिलोसफिकल पेपर. सो जो भी एथिक्स में पढ़ोगे वो वहां पे भी यूज करके आना. इस बार का ही क्वेश्चन है, द हैंड दैट क्रेडल्स रॉक्स द वर्ल्ड. पूछ क्या रहा है? इट इज आस्किंग अबाउट द मदर. सो यही से अगर स्टार्ट करो, इसी स्टोरी से स्टार्ट करो, थॉमस अल्वा एडिसन की स्टोरी से स्टार्ट करो, दैट विल हेल्प यू, दैट विल एक्चुअली गिव यू द कंटेंट, दैट विल आल्सो गिव यू द फॉर्डर फॉर योर एसे पेपर्स. तो जो भी पढ़ोगे ये करो. तो एक तो ये चीज होगी कि सिलेबस याद करना है, सिलेबस से डेफिनेशन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. योर मेंस प्रिपरेशन इज कंप्लीटेड ओनली इफ, आपकी जो मेंस की प्रिपरेशन होती है तभी कंप्लीट होती है व्हेन यू अटेंड द क्लासेस, व्हेन यू लर्न थिंग्स एंड व्हेन यू राइट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अदरवाइज आपकी मेंस की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई है. अगर सोसाइटी पढ़ लिया, सोसाइटी के आंसर्स लिख लिए, हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री के आंसर्स लिख लिए. तो एक एजेंडा है, 10 साल के क्वेश्चंस लिखने हैं और सिलेबस याद करना है. ठीक है, दैट इज वन. Now, first topic is about the determinants of the ethics and human interface. वहां से अगर हम start करें, always consider apart from the examples, what are your important documents? कहाँ से अपना base लोगे? कहाँ से आप सोचोगे कि आप ethical person हो कि नहीं हो? क्या आपका कोई भी action, is any of your action ethical or not? What is the base? What will you follow? You want to decide something is right or wrong. Whose help do you take in normal life? Society. So yes, now I'm asking you this, whose help will you take? You will take the help of society. If society says this is right, this is right, that is one thing. Or anything else. So if society says the live-in relation is wrong, it is wrong. If society says the same-sex marriage is wrong, it is wrong. That's what religion can be. Other thing, can I say law can be other thing? Domestic violence is wrong because it is illegal. Child labor is wrong because it is illegal. Can I say constitution? Can I say we also take whether we are right or wrong depending on the family. What does my family member says? What does my teacher says? What does my father says? What does my mother says? ये हमको बताता है right or wrong क्या है. Ethics is, what is ethics? Ethics is study of right or wrong. आप study करते हो कोई चीज सही है कि गलत है. But what is right or wrong depends on many factors. It is not as black or white. ये सही है, ये गलत है. That is not the case in ethics. Understand this. We are trying to open up your perspectives. What is right? What is wrong? It's not simply black or white. There are shades of gray. कितना सही, कितना गलत, क्या सही, क्या गलत. तो ये सब आपके ऑलरेडी चीजें होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि आप एथिक्स की बात कर रहे हो, आपके लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि गांधी जी 7 सिन पढ़ लेना, प्रियम्बल को देख लेना, फंडामेंटल ड्यूटीज को देखना. यू शुड रिमेंबर फंडामेंटल ड्यूटीज. फॉर मेनी ऑफ अस हु हैव इंटरेस्ट इन संस्कृत श्लोक्स, दोहा, ट्राई टू यूज दैट. सुना होगा कबीर के दोहे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. So even if you grow in life, if you just grow in life and if you are not useful to the society, then what is the use of growing up? ठीक है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जब मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई. So you can find flaws everywhere, but once you start finding flaws in yourself, then you will realize that it is not the world, it is me. वो बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. You look the world the way you are. Whether you will find this as half full or this as half empty depends on what is your outlook towards the place. क्यों important है? Ethics में जब case study देगा, ठीक है, आपको एक situation देगा, it will give you a situation. Your outlook actually matters. It matters that how you are looking at the things. ठीक है, तो ये कुछ आपके important documents. Let me start off with the first thing. What is the name of the paper? The name of the paper is Ethics, Integrity and Aptitude. ये पेपर का नाम है, Ethics, Integrity और Aptitude. Ethics यानी क्या? Ethics means it is a field of study to determine what is right or wrong. ये आपको बताता है कि क्या सही और क्या गलत है. Generally, we believe what is right or wrong depending on the norms of the society. So that means ethics is what? It is a field of study which determines right or wrong on the basis of the society. क्या society क्या कह रही है right और
wrong. That is what your ethics is. Now, what is integrity? What is integrity? Integrity का मतलब ये होता है, no matter what happens, you will always follow your values. चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई देख रहा हो, नहीं देख रहा हो, you will always follow your principles, you will always follow your values. Aptitude यानी क्या? Anybody? What is aptitude? I have an aptitude for maths, I have an aptitude for English, I have an aptitude for teaching. What does aptitude mean? Shamta. Okay, ठीक है. Shamta means capacity. Aptitude means basically a skill that is generally inborn but can also be acquired. आपके अंदर inborn एक talent होता है, drawing का talent है, singing का talent है, dancing का talent है, but it can also be acquired. So it's a skill. It is a skill that is generally inborn or that can be acquired. आपका paper is not simply about ethics paper. It is also about integrity. It is also about aptitude. If I say एक question UPSC का ही पूछा गया है, question को ध्यान से सुने. Question is, while hiring an individual, when you are hiring an individual, you should look for 3 things. That is your aptitude, that is your intelligence and integrity. आपको 3 चीजें देखनी चाहिए. That is your intelligence, that is your integrity and that is your energy. आप जब भी recruit करते हो, आपको 3 चीजें देखनी चाहिए. One is energy, one is aptitude and the other is integrity. It says that if you don't have the last one, the first 2 becomes useless. अगर आपके पास integrity नहीं है, that you follow your values, that you follow your principles, then energy and aptitude becomes useless. ठीक है? एक simple example देते हैं. Like what is the importance of integrity? What is the importance of ethics? The simple example is India and Pakistan both got independent at the same time. There were 2 leaders and both of them wanted to had an ambition to become a nuclear powerful state. दोनों को ही nuclear powerful चाहिए था, nuclear power चाहिए था. We had APJ Abdul Kalam and they had AQ Khan. ठीक है? Now what happened is AQ Khan, both of them, ठीक है, intelligent, both of them having energy, both of them having vision. AQ Khan sold the trade secrets, ठीक है, to the foreign nations. But APJ Abdul Kalam was a person full of integrity, and then what happened? We could become a nuclear powerful nation. The point ये है कि energy भी है, aptitude भी है, मतलब intelligence भी है, skill भी है, but अगर integrity नहीं है, the same skills can become a disaster. अगर ऐसा questions आपसे पूछा हुआ है कि जब आप लोगों को hire कर रहे हो, you should look for 3 things. You can give this example, contrasting example, AQ Khan versus APJ Abdul Kalam. You can also show this. आप सोचते हो diagram कैसे बनेंगे ethics में? क्या कोई pictorial representation हो सकता है? Can I actually show like this? That there is a scale wherein this is a intelligence, ठीक है? Intelligence यानी skill है. ये negative है, ये positive है. यहाँ पे integrity है. Integrity यानी values है. यहाँ पे values है, ये positive है और ये negative है. मुझे बताओ, if there are A, B, C, D people, ठीक है, this A person has positive intelligence, has positive skill, यानी अच्छा talented है. This also has positive value. So this will be the best to recruit. You will always try to recruit a person who has a skill, who has good aptitude, who has good integrity, good values also. So this is the most preferred one. ठीक है, B, C, D में से I'm asking कौन सा least preferred होगा? Whom will you prefer least? B, C or D? You say C. What will you prefer? C. सबसे कम preference किसको दोगे? जब recruit कर रहे हो, will you give less preference? Whom will you give preference? C को दोगे? कि B को दोगे? कि D को दोगे? ये negative है. Most preference is A, the least one. Who will be the least preferred? You prefer B the least. Intelligence सबसे कम है, but values अच्छा है. एक second. Integrity नहीं, intelligence है. ये skill है. Values और skill के basis पे. ये skill negative है, ये skill positive है. ये values positive है, ये values negative है. Least prefer would be C. ना intelligence है ना
values है, ऐसा लग रहा है. The least preferred would be C. What do you think? D would be the least preferred. Or understand, the least preferred would be जिसके पास skill तो है but values नहीं है. क्यों? क्योंकि ये danger है. He has got good skills but he has got negative values. This person, he is not mattering. ये matter ही नहीं करता है. इसको recruit नहीं करेंगे, ये matter नहीं करता है. But इसको तो definitely नहीं करेंगे because he has got good skills but he has got negative values. C would be least preferred. No, D should be least preferred. C does not matter to me. What about B? This person has good values but has negative skill. Can I train this person? अब अगर यही क्वेश्चन पूछा था, वॉरेन बफे का स्टेटमेंट पूछा था that while recruiting a person look for 3 things: energy, aptitude and your values. ये डायग्राम बना सकते हो कि ये मोस्ट प्रेफर्ड है, this does not matter, this is least preferred, it's a danger and this can be trained. तो ethics में भी beautifully एग्जाम्पल डाल सकते हो, ब्यूटिफुली डायग्राम्स डाल सकते हो. समझ आ रहा है क्या करना है? दिस इज वन थिंग. तो क्या एक एक्स्ट्रा पॉइंट दोगे एग्जामिनर को? एक एक्स्ट्रा पॉइंट दोगे, लिख लो डायग्राम्स और एग्जाम्पल आपको सर्व करेगा. इसका एग्जाम्पल है जमतारा स्कैम, इसका एग्जाम्पल है सत्यम स्कैम. जितने भी स्कैम्स हुए हैं, द पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, they are intelligent but then they do not have good value. सत्यम स्कैम 1990s, the entire stock market, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, कितने लोगों का पैसा डूब गया. ठीक है, तो लिखो. एक काम करो, पेपर का नाम लिखेंगे एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड. फर्स्ट पॉइंट लिखे एप्टीट्यूड. ऑनलाइन क्लास, आर यू गेटिंग ABCD? व्हाट इज, हु इज द लीस्ट प्रेफर्ड, हु इज द डेंजर? समझ आ रहा है? यस, फाइन. सो प्लीज राइट द फर्स्ट पॉइंट, aptitude. Aptitude refers to specialized ability or proficiency. Specialized ability or proficiency in a specific area. It can be natural. Or acquired. It can be natural or acquired. ठीक, कल मैं 2 चीज पूछने वाली हूँ. एक तो सिलेबस पूछूंगी और एक गांधी जी का 7th sin पूछूंगी. तो 7th sin भी याद करके आना. आई विल आस्क द 7th sin ऑफ गांधी जी. ठीक है, अगर कोई ट्रिक मिलती है हाउ टू रिमेम्बर, वो भी बना के आना ताकि भूल नहीं जाओ. ठीक है, सो व्हाट इज एप्टीट्यूड? इट इज अ प्रोफिशिएंसी, इट इज अ स्किल, इट कैन बी नेचुरल और इट कैन बी acquired. राइट द सेकंड टर्म. व्हाट इज इंटेलिजेंस? What is intelligence? Aptitude is not same as intelligence. ठीक है, इंटेलिजेंस क्या होता है? When we say this person is intelligent, बताओ वो रट्टा अच्छे से मार सकते हैं. That is what we consider as intelligence. See, there's a quote. Write a quote. Start using the quotes in your answers now. Everybody is a genius. Everybody is a genius. But if you judge a fish, by its ability to climb a tree, it will live its life. It will live its whole life. It will live its own life, whole life, believing that it is stupid. ठीक है, so all of us are intelligent. ठीक है, we have nearly same IQ. All of us are genius. But do we have the right aptitude?
if I want to go into administration, do I have an aptitude for administration? Do I have an aptitude for management? Do I have an aptitude for, you tell me to sing, I know I can't sing, मेरा aptitude नहीं है, मेरे में वो talent नहीं है. But then you tell me to do something else, probably you tell me to study and deliver a lecture, I will try to do it. Yes, this is something that is manageable. So everybody's intelligence, but do we have the right aptitude? That we'll have to see. ठीक है, but intelligence क्या होता है? Right, the definition of intelligence. Intelligence refers to the ability of an individual, to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively, with its environment, with the environment. ठीक है, now मैं बस पेपर क्या है, ethics, integrity and aptitude. Aptitude is a skill, it is not same as intelligence. Intelligence is आप intelligent हो depends on whether if you are given a problem, अगर आपको कोई problem दे रहा है, क्या आप उसको process, can you process that problem, can you think about that problem, and can you come up with a solution? Only then you will be considered as intelligent. Can you think purposefully, can you deal effectively, and can you think rationally? That is what your intelligence is. Say intelligence is not same as aptitude. Aptitude is a skill that you will acquire. So I wanted to actually clarify a few words. So aptitude बता दिया, लिखे integrity, और पहले लिखे ethics. Ethics refers to a prescriptive code of conduct. With respect to righteousness, with respect to the rightness, and wrongness of an act. ठीक है, I'll just read out the definition for you. Definition क्या बोल रहा है? Ethics से क्या है? Ethics is a prescriptive code of conduct. Ethics is prescriptive code of conduct. You are prescribing something. एक होता है positive, जैसा है वैसा दिख रहा है. एक होता है normative, क्या होना चाहिए, what ought to be. What is ethics? It is a prescriptive document. It is a prescriptive code of conduct. क्या prescribe कर रहा है? It is prescribing that whether an act is right or wrong. So it's a prescriptive code of conduct which tells us that whether an act is right or wrong. For example, capital punishment. Is capital punishment right or wrong? ठीक है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, ये कौन बताएगा? Ethics बताएगा. यानी it is somebody is prescribing. When I say somebody is prescribing, who is prescribing? There are many schools that prescribe. Like capital punishment is right or wrong depends on, एक school बोलेगा that capital punishment. Online class, are you there? Are you with me? ठीक है, capital punishment is right or wrong. If we start asking about this, okay, what are your viewpoints? Is capital punishment right? I hope all of you know what is capital punishment. Is capital punishment right? अरे free होके बोलो. Capital punishment is कि हाँ, yes, death penalty, हाँ, capital punishment is death penalty. क्या death penalty सही है? Can somebody be hanged on to death? What are your viewpoints? What do you think?
how heinous the crime is. So depends on how heinous the crime is. ठीक है, whether it's right or wrong, it is somebody saying depends on how heinous the crime is. Okay, so if somebody is a terrorist, if somebody has done a brutal murder, probably it can be justified. Okay, anybody else? Raj, Priyanka, Harris, ये ethics का जो paper है ना, मैं सिर्फ dictate नहीं कर सकती हूँ, ये debate होना चाहिए, because this is trying to change your approach, this is trying to change your outlook towards things. तो ये एक इकलौता paper है जहाँ पे आप बात कर सकते हो. तो बताओ, एक बोल रहा heinous. Can I say capital punishment is right or wrong? I will say probably it is wrong, because who has given you the authority to kill someone? Is it not state killing? It is who has given you the right to life है आपके पास, but then who has given you the right to kill someone? So you cannot kill because you've not given birth to. Okay. Now you will say that it is right because it can give a lesson. एक lesson मिलेगा. It can create a deterrence. Heinous crime है, you punish. हाँ, it's a threat to a society. To threat to society रहेगा, तो you can justify it. You will kill that. You are hanging that person because it's a threat to society. It can create a deterrence. We will say that as per Immanuel Kant, it is wrong. Why it is wrong as per Immanuel Kant? Because see, यहाँ पे बोल रहा हूँ कि threat to society है, यानी you are saying that it is better to hang one person versus protecting 1,000%. Threat to society यानी just by hanging one person, I can protect 1,000%. Terrorist है, पूरी society को, पूरी city को, it can bring the entire city to ravage. पूरी city का destruction करने से अच्छा एक person को hang कर दिया. Immanuel Kant बोलेंगे, a man should be treated as an end in himself. आप इंसान को as an end पकड़ो. It should not be considered as a means to an end. I want to create a deterrence effect. I punished her so that you keep quiet. I used her as a means for some purpose. Immanuel Kant says that a man should be treated as an end in oneself rather than as a means to an end. That's what Immanuel Kant says. For example, surrogacy जाएं, abortion करें, should we go for bonded labor? Immanuel Kant will say no, because you are actually going against the dignity of a man. ये जो है 1 versus 1,000, this is your utilitarian approach. It is better to hang one because the action of hanging one person has utility. काफी utility होगी. If I hang one, I can protect 1,000. So it's a utilitarian approach. Utilitarian approach क्या बोलता है? Greater happiness for the greater number of the population. So greater happiness for the greater number. So what is right or wrong? हम बोल रहे हैं ethics आपको बताता है क्या आपका act सही है या गलत है. Whether your act is right or wrong. Ethics tells you that. But what is right or wrong? It is not as easy. Some school will say something different. Some school will say something different. तो यहीं पे पूरा debate हो जाता है. What are we saying? We are saying ethics. Ethics is a prescriptive code of conduct which tells you right or wrong. But what is right or wrong? It is not as easy. It depends on the interpretation. It depends on where are you using your source. Religion के हिसाब से probably killing an animal for the sacrifice is not wrong. But according to environmentalists, it will be wrong. Culling is wrong. But religion के हिसाब से, certain religion, it is not wrong. गांधी जी के हिसाब से it is wrong. क्यों? You should not harm any animal. गांधी जी का quote है ना, we will judge the progress of a nation or a civilization by the way it treats its animal. आप कैसे animal को treat करते हो, उससे पता पड़ता है कि आप कितने civilized हो. How are you treating a harmful being? That tells how civilized you are. So what is right or wrong it depends on कि आप क्या source use कर रहे हो. Are you using religion? Are you using custom? Are you using tradition? Are you using Gandhi ji as a source? Are you using constitution as a source? Are you using law as a source? Or are you using any school as a
सोर्स, क्या स्कूल को आप यूज कर रहे हो, यूटिलिटेरियन को यूज कर रहे हो, कॉन्सिक्वेंस को यूज करो, आप बोल रहे हो कि हीनियस है सोसाइटी के लिए, हाँ में यानी कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हो कि अगर आप उसको नहीं मारोगे, इफ यू डोंट हैंग दिस पर्सन द कॉन्सिक्वेंस विल बी बैड, यू आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। इमैनुअल कांट वुड से मीन्स की भी तो बात करो, जस्ट बाय हैंगिंग समवन इज द मीन्स करेक्ट, you are is the that means is not correct. If somebody has committed a crime, if somebody has become a danger to the society, what is the right path? The right path is to correct him rather than kill him. The right path is to go for reformative justice than to go for punishment, than to go for revenge. समझ आया? तो गांधी जी क्या बोलेंगे? An eye for eye will make the whole world blind. एथिक्स समझ आ रहा है, स्कोप समझ आ रहा है एथिक्स का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, am I able to communicate कि पेपर का मतलब क्या है? What does this paper mean to you? सही और गलत बताना इतना आसान नहीं है. What is ethics? ये हमने लिखा that it's a prescriptive code of conduct with respect to righteousness or the wrongness of an act. इसके बाद लिखिए, before I move on, online class, am I able to connect? I am not getting answers. Yes, Anju. Yes, Raj. Prachi, Priyanka, Harris. ठीक है, तो ethics क्या है? It's a prescriptive code of conduct with respect to rightness and wrongness of the act. Full stop डाल के लिखिए. The rightness or the wrongness, the rightness or wrongness is determined by various schools, is determined by various schools, like consequentialist school, consequentialist school, deontology, consequentialist का मतलब consequence based होता है, ठीक है, consequence based. deontology का मतलब है duty based. What is right or wrong is determined by many schools like consequentialist schools, deontology schools, and also by various determinants, of ethics, by various determinants of ethics, like religion, by religion, family, society, laws, etc. ठीक है, so ethics, aptitude और integrity देख रहे थे. Aptitude समझ आ गया, skill, talent that can be natural or it can be acquired. How is aptitude different from intelligence? Intelligent तभी होते हो when you can process an information, come up with a solution. Many times it is said that एक बहुत famous statement सुना होगा, problem of this generation is our intelligence has turned against us. हम इतना सोचते हैं, इतना प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को कि हम सोल्यूशन की तरफ नहीं आ पाते. Intelligence would be something that you can process the information and come up with a solution. Then only you are intelligent. Okay. So what is aptitude? How is different from intelligence? What is ethics? Ethics is right or wrong. Right or wrong is not as easy to determine. Integrity लिखिए. Integrity. Give the heading integrity. When the path of righteousness, that is RIGHTEUOS NESS, when the path of righteousness
is followed across, it is followed across time and space, is followed across time and space. It is referred to as integrity. ठीक है? So whether you are following the right path, whether you are following the right value, no matter whatever is the situation, you will not deviate from your values. आप अपनी वैल्यू से, आप path of righteousness से deviate नहीं होंगे. एक बहुत beautiful example is of Gandhi ji. Gandhi ji, if you remember, during your non-cooperation movement, during the non-cooperation movement, what happened? That everybody was saying that चौरी चौरा का incident हुआ, सबने बोला that you should not withdraw the movement. You should not withdraw the movement, but Gandhi ji ने क्या किया? He withdrew the movement. Why? Because Gandhi ji always believed in what? He believed in two values, that is your satyagraha and non-violence. So जहाँ violence आया, Gandhi ji said that probably people are not yet ready. People are not yet ready, and therefore he had to withdraw the movement. So that person is following the path of righteousness. सही रास्ते पे चल रहे हैं, चाहे कोई साथ है, चाहे कोई साथ नहीं है, चाहे कोई भी टाइम हो, चाहे वो कहीं पे भी हो. No matter what is the situation, you will always follow the path of righteousness. That is what is your integrity. लिख सकते हो. Example. Mahatma Gandhi ji believed in non-violence, and he had to withdraw NCM. He had to withdraw NCM, non-cooperation movement, because of Chauri Chaura incident. Because of Chauri Chaura incident. As he could not support violence. He could not support violence in any circumstance. कोई भी circumstance में वो violence को support नहीं कर सकते. ठीक है? Okay. So I'm just initiating the paper for you. Ethics, aptitude, and integrity. All of you, are you clear with these terms? What is ethics? What is aptitude? What is integrity? Ethics is prescriptive code of conduct, generally set by society. ठीक है? Because वही prescribe करते हैं, which helps you determine whether an act is right or wrong. There can be many determinants of ethics. Generally, society से ही जो होता है हम वो follow करते हैं, but there can be many sets of determinants. You can have family, religion, society, laws, constitution. ये होता है आपका ethics. बहुत important है ethics को इतना समझना कि मुझे बता रहे हो मेरा act सही है कि गलत है. बहुत सारे schools होते हैं, यहीं पे आपकी shades of grey आते हैं. It is not black or white. There are shades of grey. Attitude क्या है? Integrity क्या है? और आपका aptitude क्या है? All of you clear? Can I move on? Okay. एक homework लिखो. अभी तक मैंने 3 homework दिए. Syllabus, 7 sin of Gandhi ji और कुछ एक homework लिखो. IAS officers, right? IAS officers who have IAS officers who have set examples in India. You need to have a list of IAS officers who have set an examples in front of India. You have to remember 7 sin. You have to start learning your syllabus, and I said you will have to search for the IAS officers who have set some examples. कुछ नाम मैं बता देती हूँ, लिख लो, सर्च कर लेना इनके बारे में. अशोक खेमका,
अशोक खेमका, ठीक है. Basically, he has been a very proactive officer fighting for corruption. He has been an IAS officer जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे. It was in 1991 he became an IAS officer. In his 28 years of service, 28 years of service, he has been transferred 56 times. ठीक है, 56 times ट्रांसफर किया, यानी एवरेज एक साल में 2 बार ट्रांसफर हुआ है. It is very difficult to move from one place to another, but despite being facing so many transfers, the person has followed his integrity. He has still continued his fight against corruption. Okay, it is not easy to fight an entire system, which he is also trying to do. So Ashok Khemka. Second, Armstrong Palm, ARM, Armstrong Palm. He's called as the miracle man of India. He's called as the miracle man. इनको miracle man बोलते हैं. I guess ये spelling है, PALME. Armstrong Palm. He's called as the miracle man. क्या किया इन्होंने? He has built 100 kilometers of road by using what? By using people's fund, by using people's money. Crowd funding किया, लोगों से पैसे लिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था, तो लोगों से पैसे लिया एंड उन्होंने रोड बनाया है नॉर्थ ईस्ट रीजन में. ठीक है, सो इज कॉल्ड दैट कनेक्ट्स मणिपुर, नागालैंड, असम. 100 किलोमीटर का जो रास्ता है मणिपुर, नागालैंड, असम को कनेक्ट करता है. 100% गवर्नमेंट पीपल सपोर्ट था, इसलिए इस रोड को भी क्या कहते हैं? द रोड ही हैज बिल्ड, दैट 100 किलोमीटर रोड इज कॉल्ड एज पीपल्स रोड. इट इज कॉल्ड एज पीपल्स रोड. ठीक है, देन another name that you can write is U Sugayam. If you would know that there is a code of conduct. Once you become a civil servant, there is a code of conduct which says that whatever asset, जितना भी आपके पास asset है, if you have some if you have some property in your name, if you have some gold in your name, if you have some money with you, whatever is your asset, and whatever is your liability, if you have taken some loan from someone, you will have to make it public. That is code of conduct. Code of conduct rule. And now, even before code of conduct rule was there, okay, this person was the first person to make his assets and liabilities public. So जब ये रूल के पहले भी, मतलब जब ये रूल कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं था, तब भी ये था कि he was the first person to make his asset and liability public. ठीक है, so he's been very honest there, and he also has a non-tolerant approach towards corruption. तो लिख सकते हो, he is the first officer to make his asset public. और 2 नाम के बारे में सर्च करना, दुर्गा शक्ति नागपाल. Anybody from all the assets, Raj? All the assets. Okay. Now, you might know about this person, this lady, Durga Shakti Nagpal. She has been fighting sand mafias. Sand mining जो होता है, illegal sand mining India में बहुत बड़ा problem है. So she has been doing that. She has taken the administration head on. UP में she's taken an administration head on. ठीक है, नोएडा में. Then there is one more lady, the Hari Chandana Dasari, HARI, Hari Chandana, CHANDANA, Hari Chandana Dasari, DASARI. ठीक है, this lady has brought green revolution in Hyderabad. Green revolution पता है? The improving the yield that ways. But इधर green revolution का क्या मतलब है? इधर green revolution का मतलब है he got green revolution in Hyderabad. Here the green revolution means the recycling initiatives. जो भी plastic recycling initiatives है, she's taken that. ठीक है, और भी आप बाकी भी नाम कोट कर सकते हैं.
ये तो एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम है. You could write about E. Sridharan, the metro man, E. Sridharan. TN सेशन के बारे में पता है, इलेक्शन कमिश्नर. It was very tough, ठीक है, कि politicians will follow your moral code of conduct. ठीक है, जो moral code of conduct है उसको follow करना. It was not, आपका जब आचार संहिता लग जाती है, ठीक है, you cannot use, you cannot advertise, you cannot have a illegal, unfair competition नहीं होना चाहिए, unfair advantage नहीं होना चाहिए. तो politicians को to fight the politicians, to make the politicians follow these principles, it was TN session. कि बहुत इंडिया में malpractices रही हैं, electoral malpractices. He has been the one who has taken the politicians head on. So TN session, T.N. session, SESHAN, TN session. ठीक है, तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल है. ये लिख लिया, एथिक्स, एप्टीट्यूड और इंटीग्रिटी तो लिख लिया. कोट भी लिख लिया, एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज एबिलिटी ऑफ द फिश by its, if you judge the intelligence of the fish by its ability to climb, then it will believe full life it is stupid. ठीक है, एक और कोट लिख ले, एक और कोट लिख ले. According to Warren Buffett, WARREN, according to Warren Buffett, while making the recruitment in an organization, we should look for intelligence, comma, energy and integrity. Intelligence, energy and integrity. Full stop. However, if integrity is absent, the first two will kill us. ठीक है, so this is about your importance of, ये हमने terms देखे, what is ethics, what is integrity, what is aptitude. These are the terms that we have seen. कि ethics का क्या मतलब होता है, integrity का क्या मतलब है, aptitude का क्या मतलब है. इन तीनों में ethics और integrity ज्यादा क्यों important है? क्योंकि even if you have good aptitude, even if you have administration aptitude, if you do not have integrity, if you do not have good ethical principles, then what will happen? It will be a person full of intelligence, but not of lot of chaos in the administration. अगर ethics नहीं है, तो फिर वही हो जाएगा कि आपके पास क्या है? You have this, वो जो quadrant था, right? You remember the quadrant that you had? If you have, you will have positive skills, negative skills. You have positive values, you have negative values. तो अगर आपके पास aptitude है, क्यों पेपर लाया है? ताकि हम ये situation में ना trap हो जाए. This one, we should not be trapped in this situation. That you have positive skills, very intelligent, but you have negative values. That will be, you will be not serving public. क्या होते हैं? आप civil servant बनोगे. आप क्या बनोगे? Public servant बनोगे. As a public servant, who is the king? The king is your public. And who are you? You would be public servant. What is your duty? To serve the public. तो सबसे important क्या है? Service mentality होनी चाहिए. Giving back mentality होनी चाहिए. Those who go with the ambition that बहुत पैसे कमाएंगे, ठीक है, that is not the correct way of looking at things. ठीक है, so that is one. अब we'll start off with the syllabus. The first point, the first topic in your syllabus is essence of ethics. The ethics समझ आया? Basically field of study, जो right और wrong पे help करता है. Right और wrong generally हम society को follow करते हैं, but इतना easy नहीं है क्योंकि different schools हैं. Essence of ethics. Give the heading essence of ethics. What do you mean by the word essence? Essence का मतलब क्या? Essence, किसी चीज का essence.
think of these terms. शब्द को मतलब समझो, शब्द को appreciate करो. Essence. Online class. What does essence means? You know it. आपको पता है, बस बोलने की कोशिश करो. Can I say the most essential characteristic, a sense of, you know, the nature of a particular thing. The most basic characteristics is the essence. Okay. So write the mean. Essence means indispensable quality of something which defines its character. Basically, जो धर्म होता है, आग का धर्म है जलाना, आग पानी का धर्म है प्यास बुझाना, ठीक है, वायु का धर्म है बहते जाना. Essence means indispensable quality, जो उसका character define करता है. अब हम क्या करें? We are talking about ये ethics का क्या indispensable quality है. What is the indispensable quality of ethics? Ethics करना क्या चाहता है? What does ethics try to do? It want to create a very good. It want to create a virtuous society. It want to guide individual towards the path of righteousness, so that individual can always follow righteousness. What is it trying to do? It want to guide the individual to follow integrity, to follow the values. यही चाहता है ethics. पेपर इसीलिए लाया that you always follow the right path of righteousness. You always follow the path towards integrity. You should be a virtuous individual. Yes, it is to induce morality. ठीक है, fine. If you have followed Mahabharata, there's the last scene which says that why should one be good individual? Why should I be a good individual? The whole essence comes because it is important to be a good individual. ठीक है, क्यों अच्छा रहना है? सोसाइटी का फायदा होता है. क्यों अच्छा रहना है? इनर पीस आता है. क्यों अच्छा रहना है? आप अपनी स्किल्स को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो. क्यों अच्छा रहना है? क्योंकि अच्छा रहना है. It is an inherent characteristic that one should be good. समझ आ रहा है? That is what your ethics is trying to do. तो लिखो, ethics aims at creation of a virtuous society and aims to guide an individual towards the path of righteousness and integrity. As actions of an individual have an impact in the overall society. ठीक है? So what is the ethics trying to do? What is the essence of ethics? हम क्यों पढ़ रहे हैं ये पेपर? Why should I even be bothered about it? Because you as a civil servant will have lot of responsibility. You as a civil servant can create lot of difference in the society. आपके पास इतना power रहेगा, आपके पास इतना responsibility रहेगा कि आप society का development कर सकते हो या society को बर्बाद कर सकते हो. And let me tell you, with this mentality only you should go for your civil services, because that अगर कांधे पे पता है ना that this is what I have, this is the burden that I have on my shoulder. Your one signature can enable you to make generations. Your one signature कि घर देना है नहीं देना है, सब्सिडी देनी है नहीं देनी है, इनको फायदा देना है नहीं देना है, आप सिर्फ उस इंसान का, you're not simply developing that person, you're not simply developing that generation. You can create generations, you can make generations, you can break generations. That is what you will have on your hand. That is the responsibility that you have in your hand. So more than anything else, यही चीज आपको मोटिवेट करती है काम करने के लिए कि यस इतना पावर है. हम क्यों जाते हैं सिविल सर्विसेज में? Always think about why IAS? Because you will have lot of power to create difference in the life of an individuals. And the moment you do good work, you are appreciated, you are recognized. The moment you start filling your own pockets, you will get. आपका birthday, if you are an IAS officer, you have your birthday, the whole thing circulates. Somebody will drop a leather bag, somebody will drop something else, somebody will try to give you gifts, any type. That is seen. Okay? But then how far are you able to stand towards the path of righteousness? That is what it makes a difference. Okay? So this is your integrity. लिखो determinants of ethics. Just listing करा रही हूँ determinants of ethics की. First, religion. Second, society. कहाँ से ethics, right or wrong, कहाँ से समझ आता है. Third, family or teachers. Fourth, law. Fifth, philosophy. Sixth, leadership. Leadership से भी काफी कुछ सीखते हो. Experiences. Next, experiences. Next, constitution. Next point, morality. Next, conscience या intuition.
यहाँ से सीखते हो what is the right thing to do, what is the right path to go for. ठीक है. Now I said that it is not easy what is right or wrong. We are moving on to the next topic, which is the dimension of ethics. Ethics के dimension क्या क्या है? When you say ethics, let me first draw this chart and then you can draw. Ethics is a field of study. What is it concerned? It is concerned about right or wrong of an action. What are the dimension of ethics? The dimension of ethics, you can have 4 important dimension. One is, आप सिर्फ you went to a society, let's say you went to American society, and you said you are studying what is right, what is wrong in the American society. So ethics क्या है? Concerned about right or wrong. तो आप right or wrong जा रहे हो अमेरिकन सोसाइटी में पढ़ने, फ्रांस की सोसाइटी में पढ़ने, जर्मनी की सोसाइटी में पढ़ने, कि उनके हिसाब से क्या राइट और क्या रॉन्ग है. यू आर सिंपली डिस्क्राइबिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग. दैट इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स. कई लोग फिलोसफिकल माइंडसेट के होते हैं, वो बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय राइट, व्हाट डू यू मीन बाय रॉन्ग, व्हाई इज राइट राइट, व्हाई इज रॉन्ग रॉन्ग. दे आर इनटू फिलोसफिकल mindset. They are concerned about the meanings. That is your meta ethics. एक और ethics है, that is your normative ethics. ये, this is what we are concerned about majorly. That what is right or wrong, what ought to be right or wrong. So this is about prescriptive ethics. इसको prescriptive भी बोलते हो, कि सही और गलत है क्या. यहाँ पे बस डिस्क्राइब करो, ये सही है, ये गलत है. यहाँ सोसाइटी में कैनिबलिज्म राइट है, कैनिबलिज्म गलत है, सिंपली डिस्क्राइबिंग. यहाँ पे फिलोसफिकल माइंडसेट में हो, राइट का मतलब क्या, रॉन्ग का मतलब क्या, एथिक्स का मतलब क्या, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म्स. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. व्हाट एक्चुअली इज राइट अकॉर्डिंग टू वेरियस स्कूल्स. व्हाट शुड बी राइट एज पर गांधी जी, व्हाट शुड बी राइट एज पर इमैनुअल कांत, what should be right as per Thomas Hobbes, what should be right as per any other philosopher. सही और गलत क्या है, what is right, what is wrong, depends on the philosopher's religion, nature, law, etc. And once you understand what is right or wrong, you tend to apply those in your normal life. This is called as applied ethics. For our ethics paper, we are majorly concerned on these two. But I am opening up the dimension of ethics for you. हमें सही और गलत, we have to decide what is right or wrong, and whom do I take a base, whom do I ask, whom should I go for an anchor. मैं अपना anchor कहाँ ढूंढूं. I can go for this. And once I understand right or wrong as per various perspectives, सही और गलत वेरियस पर्सपेक्टिव से जब समझ आएगा, then I will apply it where? I will apply in my answers, I will apply in my case studies, I will apply in my daily life, right? That is, these two are concerned for us. But a topic has been given in your syllabus, dimension of ethics. So they want you to understand the whole story. They want you to understand where is this coming from, what is right or wrong. It is coming from this. There is one field, there is two field, three field, and the fourth field. हमें इसके लिए concern है, हमें fourth के लिए concern है. It is, अगर इसको देखें, if I say this, if I actually write like this, इसको मैंने, I'll just demarcate this. ठीक है. Descriptive ethics is about, you are just describing, you are just telling me what is right or wrong in a society. So if in Indian society, आप एक novel लिख रहे हो समझो, in Indian society same sex marriage is considered wrong. In Indian society live-in relation is considered wrong. In Indian society many of them consider intercaste marriages as unethical. ठीक है. So you are just telling me what is unethical in Indian society. You are describing the ethics of the Indian society. You as a person went and studied American society. You said in American society same sex marriage is ethical. In American society live-in relation is ethical.
इन अमेरिकन सोसाइटी इंटरकास्ट मैरिज इज एथिकल। आप सही और गलत है कि नहीं सोच नहीं रहे हो, आप सिर्फ बता रहे हो, आप सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो। तो ये भी एक ब्रांच है एथिक्स का। हमारे लिए पेपर के लिए इतना कंसर्न नहीं है, ये दैट इज कंसर्न फॉर दोज हु आर डूइंग समथिंग एल्स। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी इन माय पेपर इज दीस टू। सो हियर व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन द सोसाइटी इज described simply. In meta ethics, here what is going on in meta ethics, it says what does right mean, right का मतलब क्या, what does wrong mean, सिर्फ आप मीनिंग से कंसर्न हो, ठीक है। नाउ नॉर्मेटिव एथिक्स का क्या मतलब है, what is the right thing to do in a situation, that is your normative ethics। आप एडवाइस दे रहे हो क्या सही है और क्या गलत है, बट किसके बेसिस पे, नॉट ऑन योर ओन बेसिस, योर बेस डज नॉट मैटर। किसके बेसिस पे, गांधी जी क्या बोलेंगे, इमैनुअल कांत क्या बोलेंगे, सोक्रेट्स ने क्या बोला, प्लेटो क्या कह रहे हैं, एरिस्टोटल ने क्या बोला, ठीक है। यूटिलिटी है कि नहीं है, उसके बेसिस पे आप बताओगे सही है कि गलत है। एंड अप्लाइड एथिक्स इज, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द moral thinking in real life। अब आप रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। How many of you have heard this story of सविता हरलप्पन? सुना है? आयरलैंड सुना है? आयरलैंड, इंग्लैंड के बाजू में एक कंट्री है आयरलैंड। वहां पे there's lot of dominance of religion, Catholic Christians, so they don't consider abortion as correct, ठीक है। they are pro-natalist, कि भगवान बच्चा भगवान की देन है, so a man cannot interfere in this। What happened is there was an Indian lady, she was there in Ireland, she was a doctor herself, she was conceive किया। अब complications हो गई डिलीवरी में, complications came in the while she was pregnant। There came a stage that if the lady does not go for abortion, the lady could die, but the doctors there did not recommend abortion and the lady actually died। Then they had to change the laws। Now ये एक ethical dilemma आ जाता है, especially abortion becomes a ethical dilemma। that अब abortion एक ethical dilemma है। क्या ethical dilemma यानी कि कोई भी एक्शन आप ले लो, 100% एक्शन करेक्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह जाएगा, कहीं ना कहीं इश्यूज आएंगे। तो अबॉर्शन ऑलरेडी एक एथिकल डायलेमा है। द एथिकल डायलेमा इज राइट ऑफ द चाइल्ड टू लिव। क्या कैन वी गो फॉर अबॉर्शन, देन व्हाट आर वी डूइंग, हम चाइल्ड का राइट टू लाइफ ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, इज द चाइल्ड independent, is the child independent of mother? चाइल्ड को जब कह रहे हो कि राइट टू लाइफ है, तो चाइल्ड तो एग्जिस्टेंस ही नहीं आता बिना मदर के, तो आप कैसे कह रहे हो कि राइट ऑफ चाइल्ड है? चाइल्ड इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द मदर टिल द टाइम ही इज कंप्लीटली बोर्न, तो चाइल्ड इज नॉट एन इंडिपेंडेंट पार्ट। तो यानी कि यहाँ पे चाइल्ड का राइट है, तो यहाँ पे चाइल्ड को बचाना है। यहाँ पे अगर चाइल्ड इंडिपेंडेंट नहीं है मदर से, तो किसकी चलेगी, मदर की चलेगी। क्या अबॉर्शन करना सही है? क्या रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं है? इट इज माय रिप्रोडक्टिव राइट, ये मेरे पास हक है कि मैं पैदा करूं कि नहीं पैदा करूं, क्या स्पेसिंग होनी चाहिए, तो रिप्रोडक्टिव राइट ऑफ द मदर। ऊपर से दिस इज ऑलरेडी, अब जब सविता हरलप्पन वाला जो केस था, उसमें क्या था कि the right of the mother versus the right of the mother to live versus the right of the child to live। किसको बचाएं, right of mother to live or the right of child to live? तो ये ethical dilemma है। Where am I drawing the point? I am making you that what is a right action, what is a wrong action, it is not easy। If you prescribe something, if you say normative ethics, it is not easy। It depends on कौन से perspective से आप
देख रहे हो, ठीक है। एक और केस से समझते, देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम हाइंस, H-E-I-N-S, Heinz. Heinz was a person and his wife, this is a person called as say H, ठीक है, ये H एक इंसान है, his wife is very ill, इनकी बीवी बीमार है, she is suffering from a terminally ill disease, मतलब she could die, ठीक है, ये ऐसी डिजीज है that she could die. Now there is a chemist जिसके पास ड्रग है, he is the only person who has drug, so he knows that Heinz needs the drug for his wife. तो उनको लगता है कि ठीक है, मेरे पास अकेले के पास पैसा है, मेरे पास अकेले के पास ड्रग है, I can sell at a exorbitant price, मैं बहुत ही high cost पे इसको बेचता हूँ, I will sell it at a high price. This person does not have money. He goes and requests it to chemist, please give me drug. He says, please give me at whatever money that I have, मैं आपको आगे पे कर दूंगा. The chemist refuses. He says, okay, if you cannot, if you cannot wait for that, at least reduce the price for some time. So he does not agree. He says, I am the one only who will sell. I will sell it at this price. ना उसको उधारी का चांस दिया, ना उसके पैसे कम किए, ना ही उसको बाद में देने के लिए, बाद में इंस्टॉलमेंट में देने की भी बात नहीं की. तो वो Heinz in desperation goes and steals the price, steal the drug. उन्हें रात को ड्रग स्टील कर दिया. Now, is Heinz action ethical? It is correct at the individual level. क्यों सही है? सही गलत ठीक है, सही है तो क्यों सही है? Tell me that. गलत है तो क्यों गलत है? Chemist is indulging in what? Chemist is indulging in 7 sin. अब अपने reference use करना चालू करो. क्या? Wealth without या commerce without morality कर रहा है chemist. तो Heinz का एक्शन एथिकल है. यहाँ पे लिख रहा है Heinz का एक्शन एथिकल है, यहाँ लिख रहा है Heinz का एक्शन अनएथिकल है. इज Heinz एक्शन अनएथिकल? चोरी की है भाई, बोल दो चोरी की है तो अनएथिकल है. स्टीलिंग इज रॉन्ग. स्टीलिंग, देयर इज नो राइट वे ऑफ डूइंग अ रॉन्ग थिंग. गलत चीज करे उसका सही तरीका क्या है? सो स्टीलिंग इज रॉन्ग. स्टीलिंग इज इलीगल. तो लॉ की नजर में क्या हो रहा है? लॉ की नजर में इट इज एन इलीगल अनएथिकल एक्ट. और बताओ क्यों अनएथिकल है? अच्छा, एथिकल क्यों है ये बताओ. गांधी जी की 7 सिंह के हिसाब से जो केमिस्ट ने किया वो अनएथिकल था, इसलिए Heinz का एक्शन एथिकल है. Heinz had 2 things in front of him, stealing versus losing a life. So even if I go, what is more, this is wrong, but killing someone is also wrong, losing someone is also wrong, so his action becomes ethical. ठीक है, so here stealing versus losing life. Will, क्या, if had the chemist been charged, can I charge the chemist of murder? Can I say chemist actually was indulging in murder? Heinz का क्या as a responsibility of husband की नजर से अगर देखो, आदमी सिर्फ आदमी नहीं है, आदमी एक सिटीजन है, ठीक है, लॉ की नजर में इलीगल हो गया. आदमी एक हस्बैंड है तो वाइफ की नजर में उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सेव हिज वाइफ. मैन इज ऑल्सो, उसका ड्यूटी देखो, केमिस्ट सिर्फ केमिस्ट नहीं है, केमिस्ट एक सिटीजन भी है. केमिस्ट का खुद का ड्यूटी है. क्या केमिस्ट इज केमिस्ट नॉट गोइंग फॉर डीरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी? मतलब क्या केमिस्ट अपनी ड्यूटी से हाथ नहीं छोड़ा रहा पीछे? केमिस्ट का ड्यूटी क्या है? टू सेव दी लाइफ. सो केमिस्ट इज इंडल्जिंग इन डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी. केमिस्ट अपनी ड्यूटी से पीछे भाग रहा है तो केमिस्ट अनएथिकल हो गया. केमिस्ट अनएथिकल हुआ यानी Heinz का एक्शन सही हुआ. तो Heinz एथिकल है कि नहीं है, केमिस्ट एथिकल है कि नहीं है, ये आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हो. किस एंगल से देख रहे हैं हम? वी आर लुकिंग एट एन एंगल फ्रॉम, वी आर लुकिंग एट एज एन एंगल फ्रॉम अ सिटीजन, अ मैन, in the eyes of a duty. You as a person, ठीक है, you are a student, you are a girl, you have your gender, you as a person, you are a civil servant aspirant, you are a citizen, ठीक है, you are a student, you have a duty towards your teacher, you are a daughter or a son, you have a duty towards your
पेरेंट्स। तो आपके अंदर इतनी आइडेंटिटीज हैं, उस आइडेंटिटी से यू कैन सी योर एक्शन इज राइट और रॉन्ग। समझ आया? इसके साथ आपके स्कूल्स भी हैं। कॉन्सिक्वेंशली स्कूल्स के हिसाब से इट वाज लूजिंग अ लाइफ, कॉन्सिक्वेंशली स्कूल्स के हिसाब से लूजिंग अ लाइफ और सेविंग अ लाइफ is much more important. Consequentialist school will say that his action is ethical because the consequences he saved a life. समझ आ रहा है? Stealing versus saving a life ही तो है, तो दोनों का consequence क्या है? Saving a life is always superior. Duty based school, deontology बोलेगा no stealing is wrong. No matter what you do, stealing is wrong. गांधी जी बोलेंगे stealing is wrong. समझ आ रहा है? मीन्स के हिसाब से द एक्शन ऑफ हाइंस इज रॉन्ग। तो आप अपना राइट और रॉन्ग मीन्स की तरफ देख रहे हो, आर यू फॉलोइंग द राइट मीन्स, या कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ से देख रहे हो? क्या आप अपना ड्यूटी एज अ सिटीजन देख रहे हो, ड्यूटी एज अ हस्बैंड देख रहे हो, ड्यूटी एज अ केमिस्ट देख रहे हो? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग फॉर एथिक्स? तो ये आपके एथिकल डायलेमास हैं। तो इसमें आपका क्या काम आ जाता है? इसमें आपका प्रिस्क्रिप्टिव स्कूल काम आ जाता है। What is the right thing to do in a situation? That is what we are concerned about. We are not concerned about this. We are not concerned about this. ये कोई और सब्जेक्ट में आएगा, not in ethics paper for your general studies. ठीक है? So this is about your thing. तो लिखो, इन सब के बारे में लिख लो थोड़ा थोड़ा। Ethics refers to the rule of conduct that the society places over itself to guide behavior, choices and action. ठीक है? लिखो descriptive ethics. Descriptive ethics. It is about what society think is right. Full stop. It involves description and study of people's belief about morality. जब भी आप history पढ़ते हैं, ठीक है, whenever history is written, one important thing that historians are told that you should study that society, because what society think is right or wrong and what action will they take, we'll have to look from that prism. ठीक है? तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सोसाइटी के हिसाब से ये सही है, तो अगर वो ये कर रहे हैं तो they are not considering it as an immoral practice. Whether it is immoral or not, that will fall under the domain of prescriptive ethics. क्या ये immoral है? किसी के नजर में है, किसी के नजर में नहीं। बट हम यहाँ पे वो नहीं सोच रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सोसाइटी के हिसाब से ये एथिकल है, सोसाइटी के हिसाब से ये अनएथिकल है। सो इट इज अबाउट व्हाट सोसाइटी थिंक इज राइट टू थिंक, राइट थिंग टू डू। इट इज अबाउट डिस्क्रिप्शन, इट इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्टडी ऑफ सोसाइटीज बिलीफ अबाउट मोरालिटी। ठीक है? नेक्स्ट लिखे, इट इन्वॉल्व्स एन एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन एंड इज वैल्यू फ्री। ठीक है? तो ये इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन है, जो दिख रहा है आप बता रहे हो, और ये वैल्यू फ्री है। आप नहीं बता रहे हो अपने नजर से कि ये सही है कि गलत है, आप क्या कर रहे हो? सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हो। ठीक है? राइट अबाउट नेक्स्ट वन, मेटा एथिक्स। व्हाट डज राइट इवन मीन? ठीक है? इट इज अबाउट द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ एथिकल कंसेप्ट। इट इज अबाउट द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ द एथिकल कंसेप्ट। ठीक है? कि कहां से ओरिजिनेट हुआ ये टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलियोलॉजी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिओन्टोलॉजी, वेयर डज दिस कम फ्रॉम? इट इज अ स्टडी अबाउट दैट। देन राइट, नॉर्मेटिव एथिक्स। इट इज कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज द राइट थिंग टू डू इन अ सिचुएशन। ठीक है? दैट मीन्स व्हाट आर यू ट्राइंग टू सी ऑल ऑफ यू? आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आउटलुक। इसको डिटेल में मॉरल थिंकर्स में पढ़ेंगे, बट हम सिर्फ थोड़ा सा बेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं। व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, वेदर द एक्शन इज राइट और रॉन्ग। क्या मेरा एक्शन सही है कि गलत है? इट विल डिपेंड ऑन व्हाट इज द एंड रिजल्ट, वेदर इट इज good for the society, whether it is good for me, whether it is good for a person involved, or it can also depend on, यानी एंड पे डिपेंड कर रहा है कि क्या कॉन्सिक्वेंस रहा। इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन आपने क्या मीन्स फॉलो किया। सबका फायदा हो रहा है बट चोरी करके हो रहा है। रॉबिनहुड रॉबरीज, तो इज रॉबिनहुड रॉबरी राइट और रॉन्ग? चोरी की है तो गलत है, बट
लोगों का फायदा हो रहा है तो probably सही है. तो this whether an action is right or wrong depend on the means. It can also depends on the end. Means जिस school, the school that decides whether the action is right on the basis of means. School कौन सा school है? The school is deontology school. इसको आप deontology या deontological ethics बोलते हो, या इसको आप क्या बोल सकते हो, और you can say, और कौन सा स्कूल है? Kantian ethics, या और duty based ethics. Gandhiji also believed in what? Gandhiji also believed in means versus end. Whether an action is right or wrong depends on this. ठीक है. दूसरा बता रहा है whether the action is right or wrong depends on the end. इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो consequentialist school. Consequence क्या है? ठीक है. अब consequence किसके लिए सोचूं? End किसके लिए सोचूं? Should I think the end for my own self, or should I think of the consequence of for the society, for the others? Should I think about my own self, or should I think of the others? If I am happy, then only I can keep you happy. So if I want to keep you happy, I should think about my happiness. So something that makes me happy is an ethical action. ऐसा भी एक school of thought है. ठीक है. See, if you want to perform as a duty as a civil servant, if you are satisfied, if you are happy, then only you will perform your duty well. If you perform your duty well, then only you can look for the welfare of the others. If you are grumpy, if you are sad, if you are frustrated, then you cannot look for the happiness of the others. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? Consequence, that means I should be happy, self, or the other should be happy. Self happiness के लिए क्या है? Self happiness के लिए दो school है. There are two schools. Please write. The psychological egoism, ethical egoism. ठीक है. Psychological egoism में ऐसा बोल, चलो इसको डिटेल में नहीं करते हैं, अभी के लिए सिर्फ चार्ट बनाते हैं. Let's not complicate it. Psychological egoism and ethical egoism. और others में क्या है? Write about utilitarianism and the concept of common good. ठीक है. कि क्या एक्शन सही है कि नहीं डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी ऑफ माय एक्शन. इज इट ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पॉपुलेशन? क्या कॉन्सिक्वेंस है, और दूसरों के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस है? क्या मेरा एक्शन कॉमन गुड ला रहा है? क्या इज कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी ब्रिंगिंग common good? Is it bringing happiness to the greatest number of the people? क्या या is my action following the correct means? What is the ultimate thing you want to do? You want to reduce crime or you want to punish the criminal? करना क्या चाहते हो? क्राइम कंट्रोल करना चाह रहे हो कि पनिश करना चाह रहे हो? तो मीन्स क्या है वो बताओ. ठीक है. That is what is about your entire dimensions of the ethics. ठीक है. Now, so what have I done so far? अभी तक I have just opened up the subject for you. I have just opened the subject for you. What is the subject? The subject is ethics, aptitude, and integrity. Ethics, aptitude, and integrity. Aptitude is the skill, the talent that you have, that you can acquire, that you have. It is not same as intelligence. Intelligent, everybody is intelligent. Everybody is intelligent, almost same IQ, same level of intelligence what you have. What is intelligence? It is whether you are able to process an information. You are trying, if you are given a problem, can you process it? Can you understand it? Can you come up with a solution? That is your intelligence level. But then you can be talented at some field, you can be not talented at the other field. That is about your aptitude. What kind of aptitude is UPSC looking forward? UPSC is looking forward for an administrative aptitude. Do you have an administrative aptitude? Can you handle the administration of a district? That is what it is looking for. Second, what is UPSC looking for? Apart from aptitude, that is checked in your GS papers, polity mein hai, IR mein hai, aapka economy mein, that is your aptitude that they are checking. Apart from aptitude, do you have
इंटीग्रिटी। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में जाने के लिए इंटीग्रिटी है क्या? क्या होती है इंटीग्रिटी? राइटियसनेस के पाथ को फॉलो करना, हमेशा सही रास्ते पे जाना। बट सही गलत क्या है, व्हाट इज राइट और रॉन्ग, विल बी डिटरमाइंड बाय योर एथिक्स। व्हाट इज एथिक्स? इट इज अ प्रिस्क्रिप्टिव कोड ऑफ कंडक्ट दैट टेल्स यू राइट और रॉन्ग। किसका बेस लोगे? सी, you all come from different background, you all come from different as a dimension of a society, so you cannot tell me right or wrong on the basis of what you have learned so far. You can tell me right or wrong on the basis of other schools, on the basis of other wise person. Who is that wise person? गांधी जी। सही, गांधी जी के हिसाब से सही है कि नहीं? Who is that right? किसको बताऊं, किससे पूछूं सही और गलत क्या है? गांधी जी से पूछेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से पूछेंगे, ठीक है, इमानुएल कांत क्या बोल रहे हैं उनसे पूछेंगे, जेरेमी बेंथम यानी कॉन्सिक्वेंशलिस्ट स्कूल से पूछेंगे। किससे पूछूं सही है कि नहीं? लॉ से पूछेंगे। किससे पूछूं सही है कि नहीं? कोड ऑफ कंडक्ट से पूछेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स क्या पूछ रहा है? आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, आपके हिसाब से सही, अब तक जो फैमिली ने सिखाया ठीक, अब तक जो रिलीजन ने सिखाया ठीक, उसको भी रखो, बट उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या कह रहा है, गांधी जी क्या कह रहे हैं, आपका कॉन्सिक्वेंशलिस्ट स्कूल क्या कह रहा है, अपार्ट फ्रॉम योर रिलीजन एंड दी अदर थिंग्स। अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है, there will definitely be a conflict because there are different perspectives. Whom will you give preference to? Whom will you give preference to? If you have constitution versus religion versus let's say Gandhi ji versus let's say Immanuel Kant, let's say consequentialist school, किसको preference दोगे? किसको preference दोगे? सही और गलत बताना है, काफी सारे different schools हैं, whom will you give preference to? बताओ, ये तो बताओगे ही। आपसे दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना, टेल अस द ऑप्शंस, एनालाइज द प्रोज एंड कॉज ऑफ ऑप्शंस एंड व्हाट ऑप्शन विल यू टेक। आप कौन सा ऑप्शन लोगे? व्हाट ऑप्शन विल यू टेक? किसको प्रेफरेंस दोगे? बताओ, सोचो। अरे किस पे ओथ लोगे? कॉन्सिक्वेंशियल स्कूल को प्रेफरेंस दोगे? यू विल गिव प्रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन. You will take an oath on the constitution. You are going to take an oath on the constitution. It is the fundamental law of the land. तो आप constitution को preference दोगे। उसके अलावा किसको preference दोगे? उसके अलावा preference देंगे गांधी जी, the father of the nation. We will give preference to गांधी जी. Everybody else can go wrong, but गांधी जी cannot go wrong. समझ आ रहा है? So this was about your ethics. I am just opening up the subjects for you. It is a beautiful subject, provided you have that aptitude for debates. You have an aptitude for learning कि हाँ सही और गलत actually क्या होता है, क्यों कर रहे हैं? Because see, you will be asked questions like this. You will be asked questions like what has happened to you. ठीक है? What you will be tested your administrative acumen in the case studies. तो उसके लिए आपको पहले ये सब चीजें समझनी पड़ेगी. ठीक है? Now, I said when I was doing the determinants of ethics, अभी I'm just opening up the subject for you. I said determinants of ethics, law है, constitution है, intuition है, religion है. So let's understand some of these things. Write the term morality. If I simplify, ethics क्या है? Ethics is a code of conduct which tells me what right or wrong. एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट जो मुझे राइट और रॉन्ग बताता है. जनरली क्या होता है? सोसाइटी एथिक्स, सोसाइटी का एथिक्स होता है. ठीक है? इंडियन सोसाइटी का एक एथिक्स है, अमेरिकन सोसाइटी का अपना एथिक्स है, फ्रेंच सोसाइटी का अपना एथिक्स है. तो सोसाइटल बेस्ड होता है. एथिक्स इज जनरली सोसाइटल बेस्ड. व्हेन आई यूज द वर्ड मोरालिटी, morality is what? Morality is individual specific. Morality is individual specific. That is what you believe to be right or wrong. यहाँ पे क्या है? What does society believes to be right or wrong? यहाँ पे क्या है? What you believe to be right or wrong. एक perfect example. Can I say
My society does not believe in same-sex marriage. My society does not believe in the same-sex marriage. But is it possible that I, as an individual, can believe in the same-sex marriage? I can say that what is wrong in same-sex marriage? So ye kya hai? Ye meri morality hai. But my society is not believing in the same-sex marriage. That is what societal ethics is. कोई example याद आ रहा है history से जहां पे morality of an individual was in conflict with the societal ethics? Yes. All the social reforms. There was a time when girls' education was a question mark. There was a time when widow remarriage was a question mark. There was a time when child marriage was practiced. But then we had our social reformers. What happened? The morality of the social reformers was in conflict with the ethical one. तो क्या morality और ethics conflict में हो सकते हैं? हाँ. क्या morality से ethics shape हो सकते हैं? हाँ. क्या morality can further improve your ethic, societal ethics? Yes. ठीक है. So determinants of ethics बता रहे हैं कि morality भी एक determinant है. ठीक है. तो लिखो morality के बारे में. Morality is derived from the Greek word mores, M-O-R-E-S, mores, which means habit, conduct, and character. Morality is defined right or wrong conduct on the basis of one's own standard, unlike ethics, which are generally based on societal standards. Okay, लिख लो ethics versus morality. Examples of ethics versus morality. एक difference का बताएंगे. Let's make a chart. Let's make a table of difference. On one side, write morality. On the other side, write ethics. First, we'll start off with definition. क्या definition है morality की? First point. It's a set of standard held by an individual that helps in guiding right or wrong conduct. What I'm saying, this is the set of right. This is the set of right or wrong standards that is held by an individual. ये individual hold करता है, ये कौन hold करती है? Society help करती है. Now, this is what you believe to be right or wrong. Now, if you believe something to be right or wrong, if you don't follow, what will happen? If you believe that probably killing an animal is wrong, but now somebody is killing an animal in front of you. There is a society which believes that it is fine to kill an animal because for, let's say, tradition, for, let's say, custom. Cockfight is probably right, but you are an environmentalist. You believe that no, there should not be cockfight. There should not be something which can harm the animal. So if you believe something is right or wrong, और अगर वो आपके सामने हो रहा है, तो what will happen? If you're not able to do it, if you're not able to follow it, what will happen? You will feel demoralized. You will feel, and if you yourself do, you will feel guilty. So इसका जो sanction है, मतलब इसको जो energy मिल रही है, where it is getting energy from, the sanction is internal. The sanction is internal. So please write, they are sourced from the morality. They are sourced from internal factors. They are sourced from internal factors. कहाँ से पता पड़ रहा है? खुद से पता पड़ रहा है, खुद को बुरा लग रहा है. And what? They are sourced from, ethics are sourced from external factors. They are sourced from ethical factors. Why should I follow morality? Why do we follow? Why do I have this basis of morality? क्योंकि मेरा belief system है. That is what I believe in. Why do I follow ethics? Because society में रहना है. ठीक है? So why should one follow morality? तो यहाँ पे लिखो. The sanction is internal. लिखो. Belief system. It is the belief system. Where यहाँ पे the sanction is internal. क्या sanction है? The sanction is the belief system. यहाँ पे जहाँ लिखा है sanction is external, full stop डाल के लिखो. One follows, ये इसी के साथ continuation था. That sanction is internal. Internal का क्या मतलब है? Belief system. Belief system मुझे energy देता है. यहाँ पे जो sanction है, sanction is external. इसमें full stop डाल के point लिखिए. That one follows ethics set by society because society says so. Third point. If one does not follow morality, या moral principles,
it will lead to feeling of guilt. It will lead to feeling of guilt. ठीक है, यहाँ पे if one does not follow ethics, क्या होगा? Facing. If one does not follow ethics, one can face social disapproval. ठीक है, तो क्या है morality? Internal sanction, internal belief of what is right or wrong. There have been example where morality of individuals have been in conflict with the ethics of the society. So लिखो certain actions, difference is done, just write one line. Certain actions which were considered ethical once upon a time but was against the morality of the individual were child marriage, disapproval of widow remarriage, disapproval of the widow remarriage, and all the examples in the chapter of social reformers. In the chapter of social reformers. समझ आ रहा है? जितने भी examples पढ़ते हैं social reformers के chapter में, क्या है ये? They were considered once ethical by the society, but they were in conflict with the morality of the individual. लिखो. Next point. Certain examples which can approve, which can be considered moral but unethical. कुछ एग्जाम्पल्स जो कि मॉरल लग सकते हैं किसी इंडिविजुअल को, किसी इंडिविजुअल की मोरालिटी को अपहोल्ड कर सकते हैं, बट सोसाइटी में अनएथिकल है. डाउरी, कई लोग डाउरी देते हैं, कई लोग डाउरी लेते हैं और उनको लगता है ये गिफ्ट है. ठीक है, बट सोसाइटी में बाहर जाके कोई नहीं बोल सकता मैंने डाउरी ली थी. कोई चीज एथिकल है कि नहीं ये सोचना कि सोसाइटी में मैं चीख के बोल सकता हूँ क्या कि मैंने डाउरी ली थी. एग्जाम्पल पॉलीगैमी, some of the individual it can be moral, but then it is not considered ethical in the society. Child marriage, कुछ लोगों को लगता है कि yes, you should marry off your child early, but then it is not considered ethical in the society anymore. All of you, are you able to understand what is going on? किसी की morality can agree. They will say कि yes, we should go for child marriage, but it is not considered ethical in the society. So I have just tried to open up the subject for you. We will continue our discussions on the same line from tomorrow. एक दो दिन लगेगा. See, it's a new topic for you. It's a new dimension for you. It's a new subject. इसका aptitude भी थोड़ा अलग है. So you will probably need 2-3 days to get used to. But stay with me for 2-3 days. Once you get used to, you will start getting the gears from the 3rd, 4th day. So allow me some time. The class duration is very less. 17 ही classes हैं. 17-20 classes हैं. So patiently 2-3 दिन रहना, and then you decide what you can do. ठीक है. So this is from my side for today. Thank you for being patient, Raj, Prachi, Harris, Priyanka, and all the others there. Thank you so much. It's a new subject. It's a beautiful subject. Be patient for 2-3 days. You will get the hang of it. ठीक है. Okay. Bye bye.